In this video, I am going to discuss about the new chapter because already we have discussed the Newton's law of motion in the previous chapter, and today I am going to discuss about the new chapter, and that chapter is friction. I hope maybe more or less all of you know or all of you know about the term friction, and there are so many cases in our life where the frictional force plays a vital role. For example, if we will take a block, any block which is placed on a surface, and when we apply a force on it, then after traveling the some distance, this block comes into rest. In same way, when a ball is rolled on a flat surface, then after covering the some distance, it also comes in rest. So on the basis of all these examples, or simply you can say here in the third case, if we stop the pedaling of a cycle, अगर हम साइकिल में पैडल मारना बंद कर दें, तो after covering the some distance will also come in rest. All these examples shows what here? It means some opposing force is act between the surfaces which are in contact, and that opposing force is actually called what force? Frictional force. So when we apply, if the two surfaces are in contact, and when we apply a force on one body here, then automatically a frictional force arises at the contact point of these two surfaces. And the tendency of this frictional force is to oppose the relative motions of the body. Suppose if a body is placed on a surface, and when we apply a force on that body, and suppose the body is remain in rest, हमने body पे force लगाया, फिर भी body rest में है, it means our applied force and our frictional force which arises between the two surfaces which are in contact, both are equal or both is balanced to each other. The tendency of frictional force is always oppose the motion or the relative motion between the bodies which are in contact. और याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट पॉइंट, जहां दो बॉडी कांटेक्ट में, मतलब कोई सरफेस है उस पर दूसरी बॉडी रखी गई है, तो इनके कांटेक्ट पॉइंट के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स. और जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे एक ब्लॉक, एक सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी ये रखी गई है, ऐसे अभी तक इसके अंदर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा. मींस द फ्रिक्शनल फोर्स बी एक्ट ऑलवेज वेयर? लोअर सरफेस ऑफ द डस्टर एंड अपर सरफेस ऑफ माय palm, इन्हीं के बीच में, क्योंकि यही कांटेक्ट में है, और इन्हीं कांटेक्ट पॉइंट्स, मतलब यही कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स. लेकिन जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे बाहर से, तब तक इन कांटेक्ट पॉइंट्स के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप नहीं होगा. And when we apply the external force on this body, it's not matter the body moves or not. और जैसे हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बॉडी के ऊपर, ऑटोमेटिकली इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा. इट्स नॉट मैटर कि इस अप्लाइड फोर्स के बाद बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही. इट्स नॉट मैटर हियर. But in the absence of external force, no frictional force arises between the surfaces which are in contact. So in this way you can say a frictional force is defined as friction is an opposing force which comes into play when one body actually moves or even tries to move over the surface of the another body. इसका मतलब कोई भी सरफेस पे अगर एक बॉडी रखी गई है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उनके बीच में कब काम करेगा? या तो बॉडी ट्राई टू मूव, मतलब मूव करने की कोशिश करे, या उसके ऊपर बॉडी मूव करती रहे. तो ऐसे सिचुएशन में क्या डेवलप हो जाएगा? वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉडी व्हिच आर इन कांटेक्ट. एंड देयर आर द टू स्पेशल थ्योरी व्हिच इज गिवन behind this one here. First one, which one is called also the classical theory, and according to the classical theory, the frictional force is due to the roughness of the surfaces which are in contact, or the irregularity in the surfaces here, which one is also built later. And after that the modern theory comes into play, and according to modern theory, the cause of the frictional force is what here? The interatomic force of attraction between the molecules which are
एक्चुअली इन कांटेक्ट। जब दो बॉडी, मतलब जैसे किसी बॉडी के ऊपर कोई दूसरा बॉडी अगर रखी गई है, एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी रखी गई है, तो जहां पे कांटेक्ट में होते हैं उनके जो एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उनके कारण यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होता है। तो दिस वन इज आल्सो गिवन इन योर बुक, यू कैन रीड इट इन डिटेल्स अबाउट दिस। Now, I want to discuss about the frictional force, a self-adjusting force, as it is clear by its name. इन नेम से इतने क्लियर है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को खुद एडजस्ट करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ-एडजस्टिंग फोर्स। And just I have told you, suppose this one is a surface. ये कोई surface है, and a body of mass m be placed over it. कोई body है, कोई block है जिसका mass m है, जो इसके ऊपर रखा गया है। And in this case, first, no any external force is act on it. कोई external force इसमें नहीं लगा, और जब तक मैंने बताया था, जब तक कोई external force नहीं लगेगा, तब तक उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स, के कांटेक्ट पॉइंट पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप नहीं होगा। तो मान लो हम कह दें यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं है, जीरो, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या रहेगा, जीरो, और स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी इसमें रहेगी रेस्ट। एंड ऑल्सो यू नो इन दिस केस इट्स वेट विल एक्ट डाउनवर्ड mg and normal reaction are upward, but this block is neither moving upward nor downward. It means this normal reaction and weight both will be balanced to each other. अब देखिए, now we apply a external force F1. हमने इस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F1 लगाया, and as you apply the external force, applied force suppose here F1, automatically a frictional force is developed. तुरंत यहाँ पे एक frictional force develop हो जाएगा in opposite direction, and this frictional force is act between these two surfaces which are in contact, means lower surface of the block and upper surface of this table, you can see here, or upper surface of this flat surface. So this frictional force is arises जैसे ही external force लगाया गया, so suppose this frictional force is F1. And what I am saying, suppose due to this external force F1, this block is remain in rest. अभी भी ये रेस्ट में है, और जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F1 लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स F1 अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि दिस ब्लॉक इज इन रेस्ट, अभी तक ये रेस्ट में है ड्यू टू दिस फोर्स आल्सो, इट मींस दिस ब्लॉक इज इन रेस्ट। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और ब्लॉक रेस्ट में हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा इनके बीच में, दैट वन इज कॉल्ड इट्स स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा ये? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन जो डेवलप हुआ, लेकिन ब्लॉक इसमें है, रेस्ट में है। एंड सपोज हमने एक्सटर्नल फोर्स F1 से बढ़ा करके F2 कर दिया। Suppose external force is what here F2, and block अब भी रेस्ट में है, ब्लॉक मूव नहीं किया। इसका मतलब ये अपोजिंग फोर्स जो है, ये भी अपने आप को क्या कर लिया होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ा लिया होगा। एंड व्हेन दीस टू फोर्सेस, जब ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो बॉडी किसमें हो जाएगी, रेस्ट में। इट मींस दिस फोर्स इज, हम बढ़ा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, और बॉडी अगर अभी भी रेस्ट में है, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सपोज इफ द एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम F2 टू F3, and block is again remain in rest, it means this frictional force F2 is also increasing, and suppose this frictional force is ये बढ़ गया। तो what conclusion you are getting? As we increase the external force on the body, then automatically the frictional force will also increases. And suppose when we apply external force F4,
for this external force F4, this block is begins to or just, you can see here, begins to slide, or you can say here begins to slide or just start to slide, or you can say begins to slide or just start to slide. You can also see here, suppose when we apply this external force F4, at that time this block is just begins to slide. Just begins to slide मतलब जस्ट स्टार्ट टू मूव, लेकिन अभी मूव नहीं किया है, अभी भी ये किसमें है, रेस्ट में ही है. एंड एट दैट केस सपोज द फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट इज F4. तो यहां F1, F2, F3 हमने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया था, बट ऑटोमेटिकली दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट हियर इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लेवल और अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन? Maximum static friction matlab when the block is just start to slide up to that point here, what is the frictional force? F4. And suppose when we apply this external force F5, तो क्या हो गया, यहां ब्लॉक अब किसमें आ गया, मूव. अब ये यहां पे स्लाइड कर गया, और जैसे ही ब्लॉक स्लाइड करेगा मूव, तो अब इसमें जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. तो अभी यहां तक ये क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू दैट पॉइंट व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट बिगिंस टू स्लाइड. और इसके बाद व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, इंक्रीज द एक्सटर्नल फोर्स, देन द ब्लॉक स्टार्ट टू मूव. एंड नाउ दिस फ्रिक्शन व्हिच इज डेवलप्ड हियर, दैट कम्स व्हाट फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. और याद रखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है. जैसे ही ब्लॉक मूव करना शुरू करता है, तुरंत ही क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा या उसके बीच में फ्रिक्शन थोड़ा क्या हो जाता है, घट जाता है. तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन? F4. And why this frictional force is said to be the self-adjusting force? Because as we increase the applied force on the body, then automatically the frictional force is increased, static frictional force is increases up to a certain level. Due to this reason, a frictional force is also called the self-adjusting force. So now limiting friction. Limiting friction means, एक बार इसको देखिए फिर से, इसमें क्या था, अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे हमने बढ़ाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये सब जो थी, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि फ्रिक्शन तो डेवलप हो बॉडी, लेकिन बॉडी रेस्ट में है, तो वो भी एक लिमिट तक बढ़ा. एंड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट हियर कम्स अंडर द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैक्सिमम यू कैन से हियर maximum friction when the body is what here just begins to slide. So by definition you can say limiting friction is what here, limiting friction is maximum static friction up to which the body is just begins to slide. वो maximum static friction जबकि body just begins to slide हो, that maximum static friction is called its limiting friction. जैसे if anybody asks to you what is the limiting friction in this case, what is the maximum static friction when the body is just begins to slide, that one is a F4. So this one is called what here, limiting friction. So we can define the limiting friction as, the maximum value of static frictional force. The static frictional force means that frictional force up to which the body is remain in rest. So maximum value of static frictional force which comes into play when a body just begins to slide over the surface of another body is called the limiting frictional force. And remember this, just begins to slide means till that the body अभी motion में आने वाली है, लेकिन अभी motion में आई नहीं है. जैसे हमने बताया कि यहाँ पे रेस्ट में और ये बॉडी क्या थी F3 के बाद रेस्ट में, F4 पे क्या था,
just begins to slide. अब ये मूव करने वाली है कहां तक? इस फ्रिक्शनल फोर्स F4 तक। अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स F4 से ज्यादा नहीं हो सकता। F4 के बाद अगर करेंगे ये बॉडी F5, मान लो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये F4 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बॉडी क्या कर गई? मूव कर गई। और जैसे ही बॉडी मूव करेगी अब उसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन ना होकर के अब ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा इस स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ा कम होती है। So in this way you can say, for example here F4 is what here? This limiting friction means maximum static friction is called limiting friction. So in this way we can define the limiting friction. Now laws of limiting friction. Actually by taking the different experiment, the observation which is considered for the limiting friction, that will be comes in a form of what here? That one is written in the form of laws of friction. Actually this one will be what here? Several experiment, yeah, a lot of experiment is done on the for finding the what here? Limiting friction for the different surfaces. अलग अलग surface के लिए limiting friction का एक निकाला गया कि अलग अलग सरफेस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरीके से होता है, किस तरह से वेरी करती है। एंड ऑल दीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वेयर सम अप इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। So what is the first law which is given for the law of limiting friction? First one is what here? The limiting friction. And already I have told you, limiting friction means maximum static friction. So the limiting friction or maximum static friction force depends upon the nature of the surfaces in contact. Nature of the surfaces in contact means the surfaces which are in contact is rough or smooth. So nature of the surface in contact and on their roughness or smoothness. And it does not depend upon the area of the surface in contact. So first, what is first law of limiting friction? It means the frictional or the maximum static frictional or limiting friction depends on the nature of the surface which are in contact, means on its roughness or smoothness, but it does not depends on the area of the surface which are in contact. वो उसके एरिया पे नहीं डिपेंड करता कि जो सरफेसेस कांटेक्ट में है वो कितनी कम एरिया का है कि ज्यादा एरिया का। दूसरा क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मींस पैरेलल। अगर हमने अप्लाइड फोर्स जैसे लेफ्ट लगाया था तो एट द कांटेक्ट पॉइंट the frictional force is at just opposite parallel to it, means this one is also called tangential force. So the force of friction is tangential. Tangential means parallel to the surfaces in contact and its direction is opposite to the direction in which the body would start moving. इसका मतलब frictional force हमेशा जिधर बॉडी स्टार्ट मूव, जिधर मूव करने वाली होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करती है एंड अलोंग द टेंजेंशियल आर पैरेलल टू द सर्फेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट। एंड थर्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज व्हाट हियर? फॉर द गिवन सर्फेसेस द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड limiting frictional force means maximum static friction which is denoted by Fs is directly proportional to normal reaction. It means maximum static frictional force or limiting friction, दोनों एक ही चीज है, which is denoted by Fs. तो by this law, Fs or maximum static frictional force or limiting friction is directly proportional to the normal reaction. And when we remove this proportionality constant, then we introduce a new constant. So when we remove this proportionality constant, then we get Fs is equal to mu s into r. जहां mu s क्या है? इसको कहते हैं proportionality constant. और इसको नाम क्या दिया गया? What is the name of this one? Where mu s is called coefficient of static or limiting friction. कुछ भी कर, either you can say coefficient of static friction or this one is coefficient of limiting friction. So today all of you go through this one here. What is the definition for this frictional force? And then there is also given the some old theory and modern theory, modern old idea and modern idea about the frictional force. And then frictional force is a self-adjusting force.
means limiting friction, and then what is the loss of the limiting friction, which I have just discussed in this video here. So in the next video, I will discuss the next topic of this chapter.